All right. So, good evening, everyone. Jai Hind. Okay. So, today we are going to discuss WAT SRTs. I have already given you that what are the common doubts है ना, of candidates, particularly in WAT and SRT. Now, I want to know कि आप लोगों के क्या doubts होते हैं WAT और SRT में. Any new doubts that you are having? Ma'am, I have one. Yes. Aditya, right? हाँ हाँ. Ma'am, for me, the doubt is basically what differentiates between an average sentence and a recommended sentence in that. Because if the word is, let's say, education, and I'll say that proper education leads to articulation, ऐसा कुछ बना के लिख दिया. How can I be sure that this is a decent, recommendable sentence for that? Okay. So, for that, see, there is no right answer for psychological testings, right? This is one of the instructions that you will see. वहां पर सबसे पहले ये होता है that you are free to write anything in all the testings. There is no right or no wrong answer because for you that particular answer is right according to your personality, right? According to your perception. So that is one thing. Don't be fearful about this. Second is your connection to that word. You have to write sentences with the linkage from your personality. ठीक है, जैसे मुझे लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग एजुकेशन का कोई पर्टिकुलर मीनिंग है, सो यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू दैट. डोंट राइट जनरलाइज्ड sentences first thing, and try to show more and more OLQs into that. If more OLQs are reflecting from your WATs, so then the WAT is good. That particular word is actually good, above average. ठीक है. ठीक है, understood. Yeah. हाँ. Any other doubts? Anything? पूछो पूछो, डाउट पूछो. If nobody's asking, I'll ask the other one as well. हाँ हाँ, sure. In basically that, when we have a negative word, right? My way of tackling word is that I'll use a word like prevents or reduces, Hmm. and then just change the meaning. Like, अगर chaos है, तो transparency helps prevent chaos. ठीक है ऐसे. Mm-hmm. But then my question is, do we add a negative word to tackle the already given negative that word? You can add negative words. There's no such restriction onto that. If you are writing your sentence which is positive and you are tackling a negative word, you can use that kind of words that avoids or prevents or stops. It's matlab no problem with that. ठीक है? And मैम Yeah. यस मैम, अगर समथिंग मतलब मीनिंग पता नहीं हो तो क्या करना चाहिए उसमें? if you don't know the meaning of that particular word, and this will happen for one or two words, है ना? So, see, you don't know the meaning of that word. You can write the word and then leave it blank. Okay? But how the psychologist would know that you don't know that you were not aware of the meaning? That's why you couldn't write. उनको कैसे पता चलेगा? वो तो यही सोचेंगे that person was वही blank. मैम. That person was blank on this word, which यस which मैम. shows the negative sign. So then what? मैम शॉर्ट में लिख दो क्या? डू नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग. हाँ, ये लिख दो. ये लिख दो. Just write down that don't know the meaning. मतलब दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग इफ यू जनरली डोंट नो. क्योंकि अगर कोई वर्ड ऐसा है विच इज नेगेटिव, सपोज गार्गी कुड नॉट गेट द वर्ड ऑफ डैगर, राइट? तो फॉर Yes, यू ma'am. यू डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड. तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इफ यू आर राइटिंग दैट डोंट नो द मीनिंग, है ना? क्योंकि आपने बाकी सारे तो लिखे हैं. एटलीस्ट आप साइकोलॉजिस्ट को एक हिंट दे रहे हो कि दिस वाज द रीजन, Okay, ma'am. है ना? इंस्टेड ऑफ लीविंग इट कंप्लीटली ब्लैंक. ठीक है? So there are 2-3 hacks that you can do in the WAT particularly. First, show elements of your personality. Wherever there are words in which you can portray your personality, please show that, because psychologist is trying to guess your personality.
तो why not give him on a platter? ठीक है, that this is me. Second, show more and more OLQs. Two things, right? These are the tips and tricks. And sometimes you can write the full sentence, sometimes you can write the half sentence or the phrase. Suppose 3-4 words are enough. Or in some of the sentences, if you are stuck somewhere and you do not have enough time, so you may write 1 or 2 words also. Okay? Because there you have to show your expressions, emotions, है ना? And thoughts. So no need to write full sentences every time, right? If you are good enough, you have good practice and good thinking ability, and you can write full sentences, that is up to you. But the main goal should be not to leave anything blank, and at least do justice and write full WAT. Okay? This is particularly for WAT. Now I am sharing the screen so that we will discuss some of the words, right? Is it visible? Yes. Can you see the screen, all of you? Yes, ma'am. Yes. Okay. So WAT and SRT is today's agenda. Let's begin with that. WAT pe we have discussed the doubts, and some of the doubts I have given the answers also. Now, acha, chalo, one more example I will give you. Suppose there is one word. Suggest me any word, if anyone. Authenticity. Authenticity. इतने बड़े बड़े words नहीं आते हैं. Confidence. ठीक है, चलो, we will pick both words. Authentic and confidence, right? Now, there are 3 candidates, ठीक है? Candidate A, candidate B, candidate C. दोनों cases में, ठीक है? A को लगता है authentic का कुछ particular meaning है ना? Give anyone what according to you is the how will you connect with authentic word? Give me sentence. हाँ? Biometric authentication saves soft copy. Yeah, soft data. Yes, biometric authentication. ठीक है, next B. Anyone? Ma'am, authentic actions lead to success. ठीक है, very good. Authentic actions leads to success. Next, C. Authentication reduce scamming. ठीक है, reduces scamming. ठीक, तो ये आपने Authentic character yes, builds trust. yes Adit. I wasn't speaking, somebody else was. Okay, can you please repeat again? Authentic character builds trust. अच्छा, Ricky, your voice is not proper. मतलब वो बीच बीच में stuck हो रही है. See, मैं यहाँ पे I just want to give you 3 examples. What I try to show, what I am trying to show that every candidate who is giving the response, वो उसके personality के लिए those responses are correct. ठीक है? First answer is given by I guess Subbu Kalaiji. Yes? Yes, ma'am. हाँ, biometric authentication. Why? Because first he is having that age, he is a service entry, और उनके life में he has used this kind of thing a lot. Biometric authentication. उन्होंने उसको वैसे सुना हुआ है. Authentication होना है तो he connected this thing with the biometric system, right? And how it is helping us. So according to his personality and his lifestyle or whatever experience he is having, उनके हिसाब से ये correct है. ठीक है? Second example is given by Bhanu, I guess. है ना? Bhanu? I give. Ganesh ma'am. Yes. So, acha, Ganesh gave authentic actions leads to success. Now, this is one of the OLQs. यहाँ पर what he is trying to tell that whosoever is truthful and taking the actions with honesty and with authentication, so it leads to success.
ultimately, है ना? So according to Ganesh, it is his view of seeing honesty or reality or truthfulness that ultimately it will bring success. Okay? So this is his perception. Then Sonak gave that it reduces scamming. So because he is pursuing engineering and is associated with some IT or AI or cyber things, that is why he has connected this word with this, right? Getting it? Hello, please Yes, respond. Yes, ma'am. ma'am. हाँ, क्योंकि मुझे ऐसे Yes, ma'am. I'm seeing only screen, so I don't know. So what I'm trying to say that any particular candidate, you can never bring ideas from outside. You will only write that word which is connected somewhere to your life, to your personality, right? So that is why there are no right answers and no wrong answers for any particular thing. Okay, whatever you are writing and you are truthful and you are writing according to your personality, till that time you are good enough, right? अब वहां पे प्रॉब्लम कहाँ आती है? We try to write more general words, है ना? General sentences we try to write, and we think that these words will give us दैट काइंड ऑफ मार्क्स, तो वो नहीं होगा. अगर आप न्यूट्रल सेंटेंसेस बना रहे हैं या जनरल सेंटेंसेस बना रहे हैं, they will not fetch more marks or they will not give the idea about your personality to the psychologist, right? Getting it? जनरल वर्ड्स में कैसे बोल रही हूँ कि मान लो ऑथेंटिक के लिए यू आर यूजिंग सम काइंड ऑफ करंट अफेयर्स और सम न्यूट्रल लाइन विच इज नॉट रिफ्लेक्टिंग एनीथिंग अबाउट योर पर्सनैलिटी, तो उस पे तो साइकोलॉजिस्ट को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना? What you can do in 60 words, this may happen that there are some negative words or some difficult words or some words which are associated with neutral sentences only. So in 4-5 sentences you can pick neutral sentences, right? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. otherwise connect with OLQs, connect with your personality, that is the mantra. ठीक है? Fine. फिर चलो अब देखो, we will check it again. Confidence के लिए give me 3 sentences. Practice Self-belief is build confidence. confidence. ठीक है, फर्स्ट सुब्बू कलाई जी. Practice builds confidence. ठीक है, Battle प्रैक्टिस. training. बस बस. Practice builds confidence. हाँ हाँ ठीक है. नेक्स्ट नंबर बी. Self-belief is confidence. ठीक है, सेल्फ बिलीव. ठीक है, नेक्स्ट. Public speaking Confidence enhances creates actions. ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग पे कोई पहले आया था. public speaking enhances confidence. ठीक है ना? आप समझने की कोशिश करना ऑल ऑफ यू, बिकॉज आई नो मेनी ऑफ यू, कुछ मेरे बैचेस में भी हैं, कुछ अलग, मतलब इतने दिन से कनेक्टेड हैं. दैट्स व्हाई आई कैन टेल अकॉर्डिंग टू योर पर्सनालिटी. This first response is given by Subbu Gulaiji, and he's, again I'll repeat this thing, service entry, and he's trying hard, he's focusing on practice more, ठीक है? And that's why he's boosting up his confidence. So for his life, his personality, this sentence is correct, है ना? Practice builds confidence. इसमें जरूरी नहीं है that more OLQs should come out or we should judge this kind of sentence. It is true for him, ठीक है? नेक्स्ट इज सेम, सेल्फ बिलीफ इज कॉन्फिडेंस. किसने दिया ये? Ma'am, I have given it. व्हाट इज योर नेम? Yashashwini, ma'am. हाँ, यशस्विनी. सो यू कनेक्ट दिस दैट इफ यू आर हैविंग सेल्फ बिलीफ, है ना, इफ यू हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड वर्ड्स हैं. सेल्फ बिलीफ कम्स विद कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस कम्स विद सेल्फ बिलीफ. Same Gargi has given public speaking enhances confidence because for her life, maybe she is trying to participate more in public life or in public speaking, and which is giving her enough confidence to stand in public. Right? Is it true for you, Gargi? Yes, ma'am. Yes. So that's what I'm trying to say, that whatever you are writing, connect with your life and you will ace it. ठीक है? उसमें फिर कोई डाउट नहीं रह जाएगा. ठीक है? डोंट ट्राई टू
fetch good sentences from outside. जितने आप बाहर से अच्छे sentences लाओगे उतना आपके लिए खराब है. This is what I should say, a hard pill, है ना? This is a hard pill that you have to take. Or whosoever assessor you will meet in your life, or the officers who are serving, or recommended candidates, they will always tell you that be yourself. Right? ये सुना है? Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. But this be yourself thing, this be yourself thing is very vast, very vast. और वो इतना जल्दी समझ में नहीं आता कि what they are trying to say, that what is the meaning of be yourself. ये तो सिर्फ 2 words हैं, है ना? But what we think TAT में, sorry, what we think कि TAT में बेस्ट स्टोरी डालनी है, WAT में बेस्ट स्टोरी डालनी है, SRT में बेस्ट डालना है ना? We think that these are some ordinary exams that we can pass with practice. ठीक है? And this whole thing is not needed. ठीक है? This is not an ordinary exam and you cannot pass it with like अगर आप किसी टॉपर्स नोट्स पढ़ लो या कहीं से आप बेस्ट चीजें पढ़ लो, वो पढ़ के if you can pass, no, not going to work. Of course practice is needed because you have to understand your personality, you have to understand your life. ठीक है? बट जो प्रैक्टिस करनी है वो खुद को समझने में और खुद की लाइफ पोर्ट्रे करने की प्रैक्टिस करनी है. यू हैव टू गिव योर outline of your life in these tests. ठीक है? That's why it is given be yourself. Okay? And the filter to SSB is very flexible. है ना? मान लो अगर मैं I am carrying one personality, suppose personality A, and I am showing myself only. So my filter is my personality till the time I am being honest and truthful. ठीक है? Someone else is coming personality B, very sharp, very good communication and very brilliant personality, है ना? Sharp minded, everything. So for him, his personality, जो भी उसका filter है ना, वो उसकी खुद की personality है, as long as the person is not faking as somebody else. ठीक है? समझ में आ रही बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, ऊपर से तो नहीं गई, चीजें समझ में आई. Yes, ma'am. समझ आ गई. हाँ, पर फिर भी ये समझ में नहीं आया होगा कि अच्छा सेंटेंस कैसे लिखना है. आया या नहीं आया? मैम समझ में ये नहीं आया कि अपनी पर्सनालिटी के आया साथ मैम. उसको कनेक्ट करना. उसको कनेक्ट कैसे करना है? उसको कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा. ठीक है? प्लस सेल्फ एनालिसिस लगेगा. सेल्फ एनालिसिस लगेगा एंड टाइम एंड सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन अगेन एंड अगेन. सपोज टुडे यू आर राइटिंग WATs. ठीक है? full 60 words you have written, then analyze each and every word. कहाँ पर आपने जनरल सेंटेंस बनाया, कहाँ पर न्यूट्रल थॉट दिया, कहाँ पर आपने एक ऐसा सेंटेंस बनाया जिसकी जगह पर इफ यू वुड हैव गिवन योर पर्सनालिटी ट्रेट, तो this would be मतलब much better than the previous sentence. So you have to stop and think and analyze and improvise. So this is the cycle where you have to practice. Okay? समझ में आया? मैम ऐसा भी होता है क्या कि जो हमें वैट मिलता है वो उसको रीचेक करने के लिए वैसे ही टैग्स और SRT भी देते हैं ताकि सब एक साथ सिंक्रोनाइज हो सके? हाँ. So for that I will say those who are freshers, ये मत सोचो, इतना कुछ आपको लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है. अगर आप if you are being yourself and performing with proper honesty, है ना, your responses will be aligned. वहां पर कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होगा. ऊपर नीचे किनका होता है मैं बताती हूँ. For WAT, suppose you have learned and prepared 500 words from outside Google से ChatGPT से निकाल के आपने 500 words तैयार कर लिए. ठीक है?
and they are like best of the best sentences. फिर SRT आपने नहीं किया है prepare, ठीक है? Situations were coming and you are writing according to your brain and there is a mismatch, ठीक है? Okay, ma'am. है ना? And those who are writing here WAT वो अपना खुद से मन से लिख रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू देयर थिंकिंग, और SRT भी वही अपने हिसाब से ही लिख रहे हैं, सो दे आर करेक्ट. सी, अगर कोई इफ अ कैंडिडेट इज एवरेज, ठीक है, एंड इन ऑल द टेस्टिंग्स, बी इट साइक, बी इट इंटरव्यू, बी इट GTO, वो हर जगह एवरेज परफॉर्म कर रहा है ना, दैट कैंडिडेट विल बी रिकमेंडेड. फाइन. But if a candidate is average, but in psychology he is performing outstanding, in interview he is low, in GTO he is मतलब even lower, और in psychology also उसने TAT में तो एकदम मस्त लिखा है और WAT SRT में बिगाड़ दिया है मामला, ठीक है? So which means that your personality is थोड़ा सा shaky, उतना समझ में नहीं आ रहा है कि आपने क्या किया है ना? So it should be सिंक्रोनाइज, मतलब पूरी चीजें सिमिलर सी होनी चाहिए कि ठीक है ये बंदा इनिशिएटिव लेता है और हर जगह लेता है, सो दैट शुड बी विजिबल एवरीवेयर, राइट? Yes, ma'am. हाँ, मुझे नहीं लगता कि आपको इतना डिटेल में इन चीजों का कोई मतलब सिखाएगा, बिकॉज एवरीवन विल ट्राई टू टीच यू दैट व्हाट इज टू बी डन एंड how to give good sentences, how to write good sentences. They may tell you that these are the rules, this is not the rule, but this is where you have to focus. Fine. हाँ मैम, सारे कहते हैं कि बिल्कुल बेस्ट निकाल के लाओ कि तुम्हारे OLQs दिख जाए, उसमें कुछ आउटस्टैंडिंग सा होना चाहिए. हाँ, पर ऐसा ही उसमें वर्ड्स OLQs बनाने को सब तुम्हारे कहते हैं. पर उसमें OLQs जो है ना वो तुम्हारे दिखने चाहिए. वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो सपोज you have fear of water and you cannot swim, right? आप नहीं swim कर सकते हो and you cannot jump into a river and cannot save anybody who is drowning, है ना? But आपने when the SRT comes कि कोई डूब रहा है and you have given this response that ठीक है, he jumped quickly and saved the person, और उसको बाहर लेकर आया, फिर उसको उसने पता नहीं चेक किया and conscious किया, फिर उसको हॉस्पिटल लेके गया, called his family, everything, but jumped and saved or shouted, called somebody, bring ropes, gave stick or something and help him out, है ना, from the water. अगर आपने ये सेंटेंस लिखा, दोनों में अंतर है. खुद कूद के उसको बचा के लेकर आना shows courage, stamina, self confidence. बाहर से रस्सी देना और फिर उसको निकालना, that shows that you do not have this much of courage कि आप इतना कूद के उसको बचा लाओ. Also you have to check the risk factor. ऐसा तो नहीं है कि खुद कूदे तो साथ में खुद भी निपट गए, ठीक है? So that is calculated. Both responses are right, but the psychologist will see that how much is your level of taking the courage. First, same word swim comes in WAT, or water comes in WAT, or jump comes in WAT, ठीक है? और save comes in WAT, but everywhere you are writing sentences which are neutral or which are not connected to any of this heroic work that you may do in the SRT, ठीक है? और that you have written. सेव पे आपने कुछ और लिख दिया है, सेव वाटर, सेव लाइफ, वाटर पे आपने कुछ और लिख दिया है, जंप पे आपने कुछ और लिख दिया है ना? इट इज नोवेयर यू हैव रिटन दैट यू हैव दिस मच ऑफ करेज दैट यू कैन जंप एंड सेव अ पर्सन, और नॉट जंप एंड सेव अ पर्सन, बट विच शुड रिफ्लेक्ट दैट saving, how come saving of anybody's life, है ना, is important, और sentences connected to that, ठीक है? or that you enjoy swimming, ठीक है, you know swimming, or you know diving, you enjoy that kind of sport, है ना? So it will be reflected if you are not giving responses as per your personality. Ma'am, how do they know that I know swimming or not? You know or not? I know.
बिकॉज आई बिलोंग टू विलेज मैम, यहाँ पे तालाब है, मतलब नॉट द स्टाइलिश वन फॉर द प्रॉपर कंपटीशन, बट आई नो हाउ टू सर्वाइव इन द वाटर एंड नॉट प्रॉपर लाइक स्विमिंग. ठीक है, सो व्हाट इज योर डाउट? अगर मैं कुछ लिखूं तो मेरा तो पहला वाला रेस्पॉन्स ही रहेगा. माय रेस्पॉन्स विल बी द फर्स्ट वन व्हिच यू रोट. क्या कह रहे बट इफ हो? समवन डजंट, नो, आई एम नॉट माय गेटिंग योर रेस्पॉन्स, क्वेश्चन. मैं ये बोल कि how the psychologist will know that I know swimming or not. How he will know? See, when you will write in such situation that I will jump and save the boy immediately, okay, without wasting any second. In that situation, psychologist will know that this person knows swimming. जिसको नहीं आती वो कभी नहीं लिखेगा jumped and saved. ओके Getting मैम. it? बहुत अगर कोई लिखे तो मतलब दिखाने के लिए थोड़ा फैक्टर 4 और लिख दिया ऐसा. वो तो फिर उसके PIQ में कहीं तो लिखा होना चाहिए ना, कहीं तो हॉबीज, इंटरेस्ट, स्पोर्ट्स, पार्टिसिपेशन कहीं निकल के आना चाहिए कि इसने कभी स्विमिंग करी है ओके मैम. है ना? ओके पॉइंट. सो वो कहीं ना कहीं इट विल बी रिफ्लेक्टेड, किधर तो आएगा ही. आप ये नहीं सोच सकते कि इफ वन टेस्ट यू हैव क्लियर्ड तो यहाँ पर दिए हुए रिस्पॉन्सेज कभी घूम के नहीं आएंगे, वो घूम के आएंगे. वो ट्रायल एंड टेस्टिंग चल रही है. मैम इफ आई डोंट नो स्विमिंग तो दूसरा रिस्पॉन्स लिखना तो सही है ना, क्योंकि नहीं आती स्विमिंग तो. मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि आपको स्विमिंग नहीं आती है and if someone is drowning in front of you, so what would be your response? Ma'am, I'll call someone or I'll use a rope to save the person. Yes. But I can't jump because You I don't can't know. jump and you can't even write that. आपसे लिखा भी नहीं जाएगा क्योंकि आपको पता है कि आप नहीं कूदोगे. Yes, ma'am. है ना? And that is the effective intelligence only, because if you don't know how to swim and then also you are jumping to save somebody, you are losing your life also. Yes, ma'am. Right? तो वो जिसकी जैसी क्या बोलेंगे पर्सनालिटी है या जिसका जो लाइफस्टाइल है ना वो वही लिखेगा. ठीक है? Yes, ma'am. हाँ. एनीवन आस्किंग एनी डाउट? हम एक बहुत सिली सा डाउट है. बिल्कुल. यस. हम अपने SRT, वैट्स या टैट्स में मोबाइल फोन का यूज दिखा सकते हैं क्या कि उसने कॉल करके बुला लिया या ऐसा? बिल्कुल. चॉइस इज योर्स. ठीक है? ओके मैम. हाँ, मतलब दिस इज ट्रू इफ यू यूज मोबाइल फोन्स फॉर सच सिचुएशंस, सो प्लीज यूज. नो इश्यूज. Unless it is told to you that you cannot use mobile phones and the networks are not there, तब तक आप बेधड़क कुछ भी यूज करो, चैट GPT यूज करो, इंटरनेट यूज करो, whatever. ठीक है? यस मैम. और डाउट है किसी को? आई गेस आदित्य वाज सेइंग समथिंग. No, ma'am, I was not actually. ठीक है, तो WATs का इशू क्लियर हुआ? Yes, ma'am, it's pretty much clear. Okay. Now I'll show you 10 words. ठीक है? Just try to write the sentences which you feel, है ना? I'll emphasize more on this part, which you feel that this is the way you connect with that word. ठीक है? Sometimes it may be neutral or related to some other thing, है ना? But mostly it should be connected to your emotions and your thinking. Fine? Ready? Yes, ma'am. यस मैम. Yes, ma'am. Okay. And see, if I'll say कि ठीक है, I'm giving you 10 words and अगर मैं टाइमर चालू ना करूं तो आप लोग नहीं लिखोगे जल्दी, है ना? मैम टाइमर मतलब कीजिए, हाँ, टाइम दीजिए. I know that टाइमर करके ही. So I'll say next, next, next. ठीक है? After 15 seconds, I will say next. So you have to write the second sentence, second word. Okay? Understood, ma'am. ठीक है. And ready all of you? यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है. All Yes, right. ma'am. Okay. You can start with 1 to 10. Start the first one.
Next. 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 Ma'am, 10 sentences only, right? Ha, 10. Next. I hope done with 10. Yeah. Yes. Okay. Done, ma'am. Yes, ठीक है. ma'am. So and these 10 for self practice है ना, बाद में खुद self practice कर लेना and you will get many sets, मतलब बहुत सारे available है on Google. Okay. So now how do we discuss all these? One person, one sentence. ठीक है? Okay, ma'am. Okay. Anyone for courage? Courage builds team spirit. Courage will? Courage isn't. Courage builds team spirit. ठीक है. If you are courageous, so team spirit is built with that, right? You have to Yes, ma'am. cooperate at times. ठीक है. Next, the sentence is good actually. Next, leader. A leader guides others with responsibility and vision. Very good. ये leadership का बहुत अच्छा sentence आपने दिया है जिलानी, है ना? Leaders guide others with responsibility and Responsibility and vision. very good, very good. Vision भी show किया है and sense of responsibility also. This sentence is also correct. OLQ is reflecting, है ना? Here also OLQ is coming out. Next, anyone? Success is achieved through consistency. ठीक है. Let her speak, सोनक. हाँ, क्या बोल रहे हो आप? मैम मैं Success कुछ is नहीं बोला. achieved through consistency. ठीक है. सक्सेस कैसे मिलती है? कंसिस्टेंसी से मिलती है. ठीक है. दैट ऑल्सो शोज योर डिटर्मिनेशन एंड योर courage to be consistent with the hard work, right, to achieve the success. Next, teamwork. Teamwork easiest task. Teamwork is a Easiest task. easiest. No, easiest. Easiest. अच्छा ठीक है, मतलब ठीक है, relaxing है. Easiest. Teamwork हाँ टास्क को इजी बना देता है. ठीक है, ठीक है. Teamwork eases the task. Okay. One other sentence. Teamwork helps everyone to achieve more together, no, ma'am? हाँ, that is also, वो उसका मतलब भी वही था. Words are different but the meaning is same. Okay. Teamwork is achieved by synergy and coordination. ठीक है, very good. Next, Teamwork risk. complete task timely. Risk, risk. Taking risk shows courage. And belief. ठीक है. Taking risk shows courage.
I'm like I am Telling more involved in a football sport, so I make the sentence like teamwork is necessary in a football match. Like I can relate it with more with it. हाँ, So is this sentence okay? sentence is okay. Ma'am, Risk, risks develop growth mindset. ठीक है. Growth Risk mindset, taking enhance capability. हाँ, what? Calculate risk taking enhance capability. हाँ, yes. Next, confidence. confidence helps us trust ourselves and face challenges. Confidence comes with the self belief. Okay, Confidence fuels actionability. ठीक है. Zirani, will you be able to write such lengthy sentences in 15 seconds? मतलब ब्रेन में आया वो बोला मैम विल यू बी मतलब कॉन्फिडेंस विल हेल्प अस वही चला था कॉन्फिडेंस ट्रस्ट आवरसेल्फ को फेस करेगा चैलेंज को आगे बोलकर ठीक है. तो आप इतना आपने लिखा है या आप सिर्फ बोल रहे हैं? Have you written also? या मैम आई रोट इट ठीक है. So if you can write such good sentences and bigger ones also, that is good. पर कभी कभी टाइम कम बचता है ना, तो ट्राई राइटिंग शॉर्टर सेंटेंसेस. यस मैम ठीक है. कॉन्फिडेंस हो गया. फिर उसके बाद क्राइसिस. Planning minimize Humanity crisis. helps in crisis. Calm mind overcomes any crisis. ठीक है. See how well she tackled this sentence, this word. Humanity. Helps in crisis. हाँ, humanity helps in crisis. If we help each other, so then we can handle any situation in crisis. Next. Soldiers tirelessly perform their duty to save nation. Very good. That's the perseverance and soldier-like mindset. है ना? This is Ma'am, also I correct. have मैंने ऐसे written लिखा था कि time soldier does management completes beyond duty limits. timely. ठीक है. Time management is also correct. Curiosity Ma'am, but works beyond duty. ठीक है. Focus. Discipline ensures focus. meditation builds focus. ठीक है. Correct. Next challenge. Focus Focus on comes with solving the self clarity. ठीक है. एक एक करके बोलो. Challenge के लिए बोलिए. Completing Adaptability challenges grows through enhances challenges. self-confidence. ठीक है. Facing challenges. ठीक है. See, all of you have written very good sentences for these. अब मुझे एक बात बताओ कि कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार लिख रहे थे, because I can easily guess that all of you are trained people for WAT. Ma'am, I'm Yashashvi. I'm writing it for first time. You're writing it for first time? Okay. And you are attending the Yes, class for ma'am. WAT for the very first time? Yes, ma'am. Okay, very good. So, have you got enough idea that how these people are making good sentences? Yes, ma'am. Through reading and practicing. Yes, through reading and practicing. So you have to develop the skill of writing good WATs, है ना, in 15 seconds each. With timer, you have to practice. Okay. Okay, ma'am. हाँ. Any doubt so far if you are having? Ma'am, in the middle of sentences, I'm getting some negative words. How could I make it positive words? So the way Janvi has tackled this word crisis, है ना, for any negative word you have to pick a strong positive word, है ना. Strong positive word you have to pick, such as she picked that humanity. Humanity helps in crisis. So this is the way that you can tackle the negative word. You just write one positive and then tackle or helps or avoids or prevents. These kind of words you can use to handle such words. Okay, ma'am. But I have written that being in crisis gives answer to the problems. Come again. Being in crisis gives answers to the problems. ठीक है. Your sentence is also correct, because if we will not face any kind of crisis or challenges, so how come we will be mentally mature, और वो strength कहाँ से आएगी, और पता कैसे चलेगा कि how to handle hardships, right? Yes, ma'am.
So your sentence is also correct. ठीक है. ऑल राइट. सो देखो यहाँ पर जो कुछ वर्ड्स होते हैं ना, वर्ड्स लाइक करेज, लीडर, सक्सेस, टीम वर्क, ये सारे ही वर्ड्स, these are the words where you have to show your mental strength, है ना, your power and your courage. मतलब ये तीनों वर्ड्स सिमिलर हैं. You have to show your courage factor, your power and your mental strength. ठीक है, just try to show. और ऐसे वाले सेंटेंसेस में ना डोंट मेक जनरल और न्यूट्रल सेंटेंसेस. अपने मन से कुछ पावरफुल सेंटेंसेस दीजिए, बिकॉज दिस इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, है ना. फॉर करेज इफ यू आर राइटिंग समथिंग एल्स एंड नॉट पोर्ट्रेइंग योर करेज, तो फिर उनको पता कैसे चलेगा दैट यू आर फिट टू बिकम अ सोल्जर, राइट? राइट. यस यस मैम. ठीक है. भूल जाते हो क्या, या फिर उसमें खो जाते हो कि अच्छा ठीक है मैम ने क्या बोला? मैम बट वैट की प्रैक्टिस करते करते सेंटेंसेस तो अच्छे आ गए, मगर मैंने एक सेंटेंस दिया टाइम मैनेजमेंट कंप्लीट्स ड्यूटी टाइमली, और मैं टाइम मैनेजमेंट में ही अच्छी नहीं हूँ. मैंने दूसरा दिया कि मेडिटेशन बिल्ड्स फोकस, मैं मेडिटेशन करती ही नहीं हूँ. पर आपको पता है ना कि मेडिटेशन बिल्ड्स फोकस एंड टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स अस इन सो मेनी थिंग्स. सो ठीक है, यू आर नॉट गुड इनटू दैट, बट यू आर ट्राइंग टू अडैप्ट दोज हैबिट्स, राइट? यस मैम. है ना. कभी क्या होता है कि हमको पता है कि अच्छी चीजें क्या हैं, बट वी आर नॉट गुड एट दैट थिंग, बट वी आर ट्राइंग टू अचीव दैट. ओके, तो कोई बात नहीं, इतना थोड़ा बहुत शैडो लाइक झूठ चल जाएगा if you know that what is right, what is wrong. Okay. ओके मैम. हाँ. अब there are some sentences for you, है ना. Those who are new to WATs, suppose for leader of sentences, a leader inspires others through actions, है ना. तो इसमें लीडर वो नहीं होता जो सिर्फ लीड कर रहा है. A leader should be the one who is inspiring through actions, है ना. which means that showing through examples, वो खुद करके दिखा रहा है. ऐसा नहीं that you have to give ragda to your jawans and you are saying कि ठीक है do 500 push-ups now only, and you yourself cannot even do 25. Getting it? So a leader should be the one जो खुद उतना काम कर सकता है, then only he is instructing others to do that. Fine. Next is failure. Failure teaches ways to improve. This is one sentence. Teamwork multiplies capabilities. Capabilities enhances. ठीक है, the work spirit enhances. Then brave people act despite fear. अगर आपके अंदर fear भी है, then also if you are brave enough to tackle that, what it shows courage. और ऐसा वाला सेंटेंस आप ब्रेव पे मत बनाइए. इफ यू सी द वर्ड फियर, देन मेक सच सेंटेंसेस. फाइन. यस मैम. हाँ. देन रिस्क. कैलकुलेटेड रिस्क लीड टू प्रोग्रेस. रिस्क, अननेसेसरी रिस्क लेना गलत है, बट इफ यू नो इनफ कैलकुलेशंस कि ठीक है मैं इतना रिस्क लूंगा तो चल जाएगा, सो दैट इज इफेक्टिव इंटेलिजेंस. कि ठीक है आप अपने हिसाब से काम कर रहे हो एंड यू हैव अप्लाइड योर ब्रेन देयर. ओके. वॉर हाईलाइट्स द वैल्यूज ऑफ पीस. करेक्ट. टाइम मैनेजमेंट बूस्ट एफिशिएंसी. एफिशिएंसी कैसे आएगी? व्हेन यू हैव प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट. डिसिप्लिन बिल्ड्स कैरेक्टर. ओके. हार्डशिप स्ट्रेंथन्स डिटर्मिनेशन. ठीक है, डिटर्मिनेशन कब पक्का होगा? दृढ़ निश्चय कब पक्का होगा? व्हेन यू आर putting the hardship. Okay. Helping others builds trust. If you are helping somebody, they will develop trust on you. If somebody is helping you, you will automatically develop trust on her. ठीक है. So that also shows your cooperation. One of the OLQ. आज की क्लास में हमने जो OLQs डिस्कस किए थे ना विस्तार से, समझ में आ रहा है उनको अप्लाई कैसे करना है? यस मैम. ठीक है, गुड. उसके अलावा ठीक है, आई होप यू गाइज गॉट इनफ आइडिया अबाउट WATs.
Yes. Yes, ma'am. Yes, ठीक है. ma'am. Now, come to SRTs. SRTs में also you have to show OLQs. Solve all problems. Yes. Yes, ma'am. I have a question. Can I write a factual sentence in what? Factual sentences in VAT. Factual in one or two if you want to write because you don't know any other sentence for that, then you can write, but avoid that. One or two you can write, but not many. Okay, ma'am. ठीक है. Ma'am, what if we don't know the meaning of any word? Just write I don't know Okay, ma'am. or not aware of the meaning. Ma'am, if I am struggling to make sentences, can I respond the word with one word? Can you respond? Come The again. respective word with one word. For example, for risk, I don't know. I am struggling to form a sentence, so I can write like leadership grows through risks. Like we can write just a leadership. हाँ, ठीक है. That works because the psychologist will connect that you are trying to show some relation between leadership and risk, right? Oh, okay. Thank you. So this can be done because see, I have. you are writing 60 words in 15 minutes. That means 15 seconds for one word, है ना? So writing full sentences in all the words is difficult. Sometimes you have to buy time for yourself, है ना? By giving one or two words in one or two sentences. ठीक है? Okay. हाँ, चलो मूविंग टू SRTs. SRTs में these are some situations which we will discuss. और यहाँ पर भी you have to solve the problem completely, है ना? Give proper solution which you think that is right and you will actually do. ठीक है? जो आप खुद करेंगे वही लिखना and write in past tense. Don't write more than 3 lines. Just write sentences like comma use करके छोटे छोटे actions लिखने हैं. Don't write full sentences that I will tell my father to do that, I will influence my family. वो बार बार I will, we will and I will ये सब नहीं करना है. ठीक है? Yes, ma'am. Because time Ma'am, is I have a less. doubt. Yes. Ma'am, my doubt is that can we use pronouns like sentence that facing challenges makes one brave. So can we use one here? आपकी आवाज कट रही है तो मैं पूरा नहीं सुन पाई हूँ. We can use pronouns. आप एक बार मेरे को टेक्स्ट कर देना या व्हाट्सएप पे भेज देना. ठीक है? ठीक है, चलो लेट्स डिस्कस दीज. First is he finds his exam hall crowded and can't locate his seat number. What will you do in such situation? Anyone? मैम टाइम में सेट कर दीजिए, मैम लिख लेंगे 30 सेकंड्स में बस. क्या? What? मैम टाइमर दे दीजिए 30 सेकंड्स का, लिख लेंगे 10 मैम. 30 सेकेंड्स का? ये 10 SRTs के लिए कितने मिनट्स मिलेंगे आपको? एक के लिए तो मैम 30 मिलता है, पता था. हाँ, तो 10 के लिए कितने मिनट मिलेंगे? 5 मिनट, 300 मतलब 5 मिनट. 5 मिनट. ठीक है, ले लो 5 मिनट एंड राइट. ओके. टाइम स्टार्ट्स नाउ.
1 minute 30 seconds remaining. Ten seconds left. Stop writing, everyone. हो गया मैम. हो गया? ठीक है. All right. सबका all 10? Yes, ma'am. 2 ठीक left, है. ma'am. कितने? 3 left, ma'am. How many left? 3. 3 2. and 2, ma'am. 2. Okay. I have 2 left. ठीक है. ये this will happen there also because they will provide you 30 minutes and they'll give you a sheet of 60 SRTs and there is no check on time. You cannot keep watch. There are no clocks in that hall. So you are at your own. You have to keep very good speed because last May they will only say 2 minutes left and they'll take the sheets. Fine. So please be very fast. ठीक है. What happens generally first 15-20 SRTs we give more time and we are very much slow. 20 के बाद we start picking up more speed. So you have to accelerate from the beginning only. Okay. Okay, let's discuss question number 1. He finds his exam hall crowded and can't locate his seat number. Go through his roll number, checked all the seats in sequence, find his seat and give the exam. ठीक है. आपने sequence Took से help. check. हाँ. Took help from teacher there. Went to exact place. Sit down. Gave exam and later thanked teacher. ठीक है. Good. ये ठीक लग रहा है He response. approached the examiners and authorities and found his seat number. Very good. ठीक है. सबका नहीं. We will discuss only 1 or 2 SRTs. ठीक है. Second, while ठीक. traveling, he notices someone trying to steal a woman's handbag. Take a picture of Shout it for alert woman and nearby passengers. What? Catch thief. He Alerted. informed Shout it. RPF, ensured woman's safety, helped to catch the theft. ठीक है. Ma'am, Award Hart confronted him and informed the RPF later. ठीक है. ये सारे ठीक है. Next, his classmate is upset after receiving poor marks. Advised, helped, and ensured getting good marks. ठीक है. Calmed her, help her with notes, clear her doubts and studied together, got good marks. ठीक है. Make understand. Helped him in studies. Got his marks better in the exam. ठीक है. Next, on the way to school, he sees a child crying alone. Calmed her, Gave a asked chocolate. her identity, wait for his parents, find his parents and handed over. ठीक है. Then went to school. Went to school. ठीक है. Next is your his team loses an important match due to poor coordination. He motivated his team, concentrate on coordination, practice well, and won the match next time. ठीक है. Very good. Next is he reaches the bus stop and realizes he has no money or card.
went to the tea shop, exchanged money, and enjoyed the journey. ठीक है. इसमें use Does the Google mobile on हाँ, bought the tickets? use GPay or whatever online source you can use that. तो Next. उसमें ये लिख सकते हैं ना मैं use the mobile for online transfer. हाँ, लिख सकते हैं. During our group task, everyone disagrees with his suggestion. Tries Shared convincing logical points. changes a suggestion. Added more logical to He politely and convinced convinced his everyone. group. He Yeah, explained goes with important. majority. भी लिख लो. Tried to influence and then went with majority. ठीक है? See, Then he witnesses a man collapse suddenly in the market. Sprinkled water, gave first aid, ensured. Just chocolate to eat. हाँ, ठीक है. Next, his friend asks for help with the project, but he has his own work pending. Advise him on the project. Give him some steps regarding it and completed his work. ठीक है. Shared with him resources and continued his own work. हाँ, ठीक है. Correct. Next, he hears strange sounds Work at night from project. a neighbor's house. Goes and Went checks. out to check. Went out. Ask to them the reason. ठीक है. और calls them through mobile, and ensured that everything is all right. Ensured safety. ठीक है. Ensured that everything is all right or ensured the safety. ठीक है. मैम Alright. बट इसमें तो एक्शन ही नहीं हुआ. तो हर जगह एक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है. आपने कॉल किया, ये भी तो एक्शन है. तो अगर मेरी पूरी एसआरटी ऐसे 2 कॉमास में ही खत्म हो जा रही है तो भी ठीक है. पूरी नहीं बच्चे, पूरी नहीं. Your SRTs and your responses should vary. कभी आप आधे लाइन में भी खत्म कर सकते हैं, कभी 2 कॉमा में भी, कभी you have to write 3 sentences or 2 sentences also. कहाँ पर? When you have to organize something. ठीक है. Okay ma'am. When you are the in charge of the college sports committee and then you have to organize the annual meet. So then you have to write 2-3 sentences. Okay ma'am. ठीक है. कोई डाउट है अभी यहाँ पे? Okay. मैम मेरा एवरेज ना 3 और 4 लाइन का ही रहता है. लाइन्स तो नहीं, तो पैरा का ही रहता है. 3 और 4 पैरा का एवरेज. ज्यादा से ज्यादा 5 नहीं, it होता है should मेरा. be बहुत 5 ज्यादा. लाइन तो बहुत ज्यादा हो गया. 5 लाइन लाइन नहीं मैम, पैरा लाइक जैसे आपने बोला ना कि लाइक डिड दिस, बस ऐसे करके मैं बोल हाँ, रहा हूँ. कॉमा अगर है तब ठीक है. दैट इज करेक्ट है. ठीक है. लाइन नहीं मैम, लाइन तो एक मैम सेंटेंसेस के टेंस में भी कुछ है, कैसे पास्ट टेंस में होना चाहिए, प्रेजेंट में. पास्ट टेंस में होना चाहिए बिकॉज व्हाट यू डिड, व्हाट दे आर आस्किंग दैट ऐसी कोई सिचुएशन है, देन द पर्सन व्हाट ही इज डूइंग और व्हाट ही डिड. कहाँ है भाई मीटिंग, कहाँ है? ठीक है. समझ में आया क्या? मैम सॉरी फॉर Yes, दैट. ma'am. मेरा कॉल आया था, मेरा को एक इस में डाउट था बस. ठीक है, पिक करना था कॉल, थोड़ा इम्पोर्टेंट था. मैम एक था ना कि आपका वो, अरे वो जो लड़का था ना, वो उसका कुछ खो गया था शायद, वॉलेट वगैरह कार्ड वगैरह कुछ खो गया था ना कुछ. मैम उसका एग्जैक्ट क्या होगा, क्योंकि कार्ड खो गया था ऐसा बोल रहा था. तो मैंने तो ऐसा लिखा था कि यूज जीपे एंड यूपीआई. ठीक है. आफ्टर दैट व्हाट इज द प्रोसेस टू गो टू द बैंक, राइट, एंड सीज द उसको क्या बोलते हैं, अकाउंट. मतलब यू कैन गो टू द बैंक, पर बैंक में जाने की जरूरत नहीं है. यूपीआई यू कैन डू, दैट इज इनफ. हाँ मैम, बट अगर कार्ड से प्रोबब्ली दे कैन फिगर आउट मोर पिन नंबर, तो दे कैन लाइक सक्सेसफुली लाइक क्या बोलूं मैं, विथड्रॉ मनी ना. तो अगर हैकर हुआ तो मतलब ऐसा कुछ हुआ तो He can block his card online. एग्जैक्टली. हाँ ठीक है.
वो भी कर सकते हैं ऑनलाइन, मतलब वॉट एवर थिंग यू कैन डू एट दैट टाइम, एक्चुअली यू हैव टू डू दैट, ठीक है? बहुत लंबे मेथड्स पे नहीं जाना है। ओके मैम। ठीक है, एंड करें फिर आज का सेशन। Ma'am, I have one doubt. हाँ गणेश। Ma'am, many say that if you miss any SRT in between, it shows that you are avoiding the situation. Is it true or क्या क्या, प्लीज से अगेन। no, ma'am? There are 10 SRTs in a row. So if you miss any SRT in between, many say that it shows your lack of actions or your confidence. हाँ, दैट्स व्हाई डोंट लीव एनी SRT ब्लैंक, है ना? फिल ऑल SRTs, ठीक है? Okay. Fill all SRTs and don't leave in between. Don't break the order also. The order should remain the same. Fine? Yes, ma'am. Thank you. ठीक है. So, shall we end this session today? Yes? Done? Thank you, ma'am. Okay, all right. Bye-bye. Bye, Jai everyone. Hind, ma'am. Bye-bye. Thank you. All the best. Bye, ma'am. Good night. Bye-bye. Good night.